Confidence is not a trait you're born with. It's something that you build and develop and get better at every day with constant practice. And there are so many ways to do that. So, good evening, everyone, and a very warm welcome. My name is Kriti, and today I'll be sharing some of my favorite psychological tricks that actually work. फटाफट से I want all of you to hit the like button, and for more such interesting content, don't forget to subscribe to our channel as well. And students, let me also share with you your timetable, your batch timings. So grade 9 students, you have your classes, sugar batch classes at 6 p.m. and grade 10 students, it's 7 p.m. for you. Moreover, we have shorts and level up sessions to ensure your overall development and best performance. चलिए, now coming back to our tricks. I know you people are super excited to know this. कि मैम क्या tricks बताने वाले हो? You know, I feel we are communicating and dealing with so many people on a daily basis. रोज कितने लोगों से बात हो रही है, and we want everything to run smoothly. Now, कैसे होगा ये? So let's get started with these tricks that will work on anybody 99% of the time. They are so very easy that you will want to try them on the next person you meet. जिससे तुम next मिलोगे, I am sure तुम try करना चाहोगे. बहुत easy सी tricks हैं. फटाफट से डिस्कस करते हैं. आई होप बाय द वे लाइक कर दिया सेशन को आपने. नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए. चलिए, लेट्स सी व्हाट्स पॉइंट नंबर 1. आस्क देम टू एक्सप्लेन समथिंग टू यू. नाउ लेट्स से आप न्यू क्लास में आए हो और you've joined a new school. Now if you want someone in your class or school to like you, just ask them to explain something to you. नए फ्रेंड्स बनाने हैं ना, तो दिस इज द easiest way to do that. This will actually improve their attitude towards you and they'll feel like talking to you. Try करके देखना. Point number 2. Point number 2 says start nodding. Nod your head up and down slightly when you want someone to agree with what you're saying. You will be amazed to know how effective this trick is. The other person will become more attentive and there are higher chances they'll agree with what you're saying. So next time, you know what to do. चलिए, point number 3 देखते हैं. Sit up and yell. Now this is going to be the most important trick for you if you really want कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज आए. ठीक है, if you find it difficult to get up in the morning, then follow this trick. चेंज आएगा ही आएगा. जैसे ही सुबह अलार्म बजे, sit and make 2 fists and yell yes. Now I know it sounds crazy. You'll be like, ma'am, क्या बोल रहे हो? है ना? But this will easily help you get out of bed in the morning, feeling refreshed. आपको चिल्लाते टाइम कितना अजीब लगने वाला है, सोच सकते हो ना? इससे आप उठ ही जाओगे. तो सुबह सुबह उठो एंड यस चिल्लाओ और देखना कि फटाफट से तुम्हारी नींद खुल जाएगी. ये वर्क करता है सच में. ट्राई करके देखना. तो you know what to do in this one. You have to sit up and yell yes, yeah, any word that you want, but हल्का सा चिल्लाओ और फिर देखो सुबह सुबह तुम खुद की नींद खुद ही खोल दोगे. चलिए, next point. Point number 4. Could you versus please. So, never start your request with the words could you. मतलब ये नहीं बोलना could you move this box. इसकी जगह पे कुछ और बोलना है. क्यों? क्योंकि now the answer to this question can be a yes or a no. So it's better to rephrase your request to please. Please help me move this box. This way you will be sure that your request will be fulfilled. अगर कोई मुझे बोल रहा है please move this box, I know कि ये करना है, somebody is requesting, I would help. है ना? होता है ना? तो छोटी छोटी सी tricks हैं and they definitely work. All right, next. Say something nice to them. Now what is this trick? This trick is actually a lifesaver. Now, if you think, अगर आप सोच रहे हो कि someone is going to start an argument with you, आपको लग रहा है कोई argument start करने वाला है, just say something nice to them. This way, you can avoid the unnecessary argument instantly. And अगर still argument या discussion start हो जाता है, keep your calm and remain silent. Analyze their point of view too. Analyze करके देखो. Try to put yourself in their shoes. Maybe they've got a valid point. तो आपको थोड़ा सा शांत रह के उनका पॉइंट समझ आएगा. पहले कोशिश करना है कि आर्ग्यूमेंट ना हो, पर अगर ऐसा कभी कुछ होता है देन उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुन के समझने की कोशिश करनी है. इन एनी केस इस आर्ग्यूमेंट का या इस डिस्कशन का एक फ्रूटफुल एंड ही होगा.
And that's what we want. We don't want ugly discussions, right? So try this out as well. चलिए next point क्या है? Point number 6. Start with this. What is this? For this point, let's say you have a group project. ठीक है, and you have one lazy person in your team who is constantly delaying work or avoiding it. होता ही है ना ऐसे, जब स्कूल में हम काम करते हैं, मैम ने ग्रुप बना दिया है, कोई ना कोई एक ऐसा बच्चा होता है जो काम नहीं करना चाह रहा होता है. Basically, that person is slowing down your speed as well. अब क्या करें? अब आप जाके उन्हें बोलोगे do this, do that. ये नहीं करना. Don't tell them to do something. ठीक है, मतलब ये नहीं बोलना है कि you do this or you do that. Instead, आपको क्या करना है? इसकी जगह पे let's see what you have to do. You have to use the words start with this. Psychologically, they'll start feeling that there is less work. So just go and say start with this. So once they are done with that, ask them to continue with the next task. And ta-da, you will see them contributing. So do this, do that, नहीं करना है. Start with this. उन्हें लगेगा कोई छोटा सा काम है कर देते हैं, ठीक है, एंड देन वो काम हो जाए, उनको बोलो कि बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम था ना, कंटिन्यू विद दिस. इससे एक मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा एंड दे विल स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग एंड आपका प्रोजेक्ट जो है वो टाइम पे खत्म हो जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी हैव बिगनिंग एंड एंड ऑफ द डे. अब ये क्या है? Let's see. You know, people are better at remembering what happened at the beginning and end of the day. In between, it's kind of blurry. So if you want people to remember something important that you've conveyed to them, कब बोलना है उनको ये? अगर आप चाहते हो कि कोई याद रखे जो आपने उनको बोला है, कभी भी बोला है या कोई बात है या कुछ भी है for that matter, convey that first thing in the morning or last thing in the evening. And there you go. ये बहुत easy सी ट्रिक थी and you can see all these points together. These were some simple tricks that you can try right away. है ना, बहुत सही सी ट्रिक्स है ना. तो ये ट्राई करना बहुत इजी सी ट्रिक्स हैं, कर सकते हो, चेंज होगा. That's why we call them psychological tricks. And if you like what I've just shared with you, quickly hit the like button and remember each of these tricks takes only some seconds to implement. कुछ टाइम लगेगा थोड़ा सा बस. सो एज लॉन्ग एज यू रिमेंबर देम यू आर गुड टू गो. आई होप आपने लाइक कर दिया है सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन हिट कर लिया है एंड मुझे कमेंट सेक्शन में कोई भी और साइकोलॉजिकल ट्रिक बता के जाना या इनमें से जो फेवरेट लगी, डू लेट मी नो विच वन वाज योर फेवरेट एंड आई विल सी यू सुपर सून. यू कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय.